गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्कार। मेरा नाम जुबिन जवेरी है और मैं आप सभी का इस वर्कशॉप में इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। और ऑलरेडी वर्कशॉप वेबिनार स्टार्ट होने से पहले कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए। इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू प्रकाश जी, संदीप जी, सुधीर जी। ग्रेट, वेलकम, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। Uh, आज का टॉपिक, what is today's topic is trying to analyze, and probably, I will do some live analysis in front of all of you. Okay. और देखेंगे, मंथ एंड हुआ है, ओके, वीक एंड हुआ है। सो नेक्स्ट वीक से नया महीना, जून का महीना स्टार्ट होगा। तो the question is, as a short term trader, yeah, positional trader, uh, on what sectors should we focus on? Okay. How should we do our analysis? So, and within the sectors, which stocks should we focus on, and how should we choose stocks? Okay. So we'll do some analysis on market, on Nifty, Bank Nifty, various sectors. We'll look at their, daily, weekly, monthly charts and try to understand. Okay, we'll also look at some RRG charts today. Okay, and try to understand and correlate. Okay, and come to some conclusion as to what is the probable action that we should take in the new month, June 2025. Okay, so I hope everyone is ready. Okay, Vijender ji, yeah, most of the time I will be speaking in English, but sometimes I'll also speak in Hindi language. Okay, so if at any point of time you did not understand what I spoke, you can feel free to ask me in the comment section. I'll repeat it for you. All right. So, this webinar will be of around an hour or so. We'll have around 10 to 15 minutes time towards the end of the workshop. If you have any questions, you can definitely, type it in the chat box and, ask me. And I would always encourage, uh, you know, participation. So at any point of time, keep your hands, busy in typing in comment section. Okay, so that interaction would be there and it would be more interesting. All right. So very quickly, I'll share my screen now. Okay, so that's the portal web.strike.money. All right, and I'm sure most of you are already using this particular software and finding it very useful. For those new people out here, the link will be there in the description. You can, it's a subscription based model, and there will be some discounts that will be offered if you click on the link that is given in this particular webinar. All right, and you can subscribe for 6 months or 12 months. All right, we'll give you the details towards the end as well. All right. So let's get going firstly. Okay, सबसे पहला तो हमको निफ्टी 50 का चार्ट देखना है. Okay. It will get launched. It will get launched, Sandeep ji, soon. I don't know what date it will get launched, but team is working very hard. Okay, to get things going, and it will be there. Okay, testing phase is going on. All right, and once the system is stabilized, it will come up. All right, let's understand Nifty chart. So we'll go to the interactive chart first and try to understand what's happening in Nifty. Let me put up our Bollinger Band and Rohit Momentum Scanner. All right. So on the daily chart, first of all, what is the trend? Is the trend up, down, or sideways? So if we can see that, after 12th of May, what has happened is Nifty is trading in, this rectangular range on a lower side, 24,400. All right. Or maybe a little bit higher if I can see. Yeah. So approximately around 24,500.
All right, 24,500, and on the upper side 25,150 or something like that. So basically, okay, almost half of the May, okay, Nifty has gone sideways only. All right, and the momentum has, you can see that, it has been slowing down. Okay, the momentum, it had given a new sell over here, but since on the weekly time frame chart, the momentum is bullish. On the daily time frame, this sell signal was not so strong, and that's what you can see, that Nifty remained sideways. And now if we look closely, there is this median line over here. So Nifty is taking support from this particular median line, which is currently at 24,692. So for Monday, 24,692, this median line will act like a very strong support level. If it starts trading below it for 15, 20 minutes, then maybe it can come further down towards this 40 EMA or the lower Bollinger Band. All right, let me draw, yeah, this level over here. So wherever the 40 EMA and the lower Bollinger Band are coinciding, this area generally acts like a very strong support level. All right, and combining that with this gap area and this little candle on the 9th of May, not so little but very important candle, we can say that this entire region is acting like a very strong support level. All right. Yes, RMI is used to take trading decisions. How, depending on the time frame, and depending on your style of trading, you check the suitable time frame, and then you can trade using RMI accordingly. Okay, in Nifty. So as I said, because on the weekly time frame chart, the RMI is in a bullish mode. What happened was that this new sell signal that was generated on 19th of May was not so strong, and because of that, Nifty did not go up, but it remained sideways. It did not even go down. After the new sell, you would expect that it would go down, but no, it has remained sideways. All right. So in a sideways range, short term, and if we look at the medium term range, we will look at the low, we will look at a higher low, and till the time this higher low is intact, this particular area is not broken, we will treat this as a uptrend only. So we have a high, we have a higher high, we have a higher high. So overall it seems to we can say that it's trying to make a kind of a triangular pattern over here. Okay, so this was a sideways breakout is not so significant, so we can redraw this somewhere over here like this. Okay, so kind of a triangular kind of a pattern it's being making over here. All right, on the weekly time frame chart, we can see that okay, it's in a nicely in a strongly bullish mode, and Nifty is trading somewhere near the upper Bollinger Band. Okay, so if there is any weakness, and as we said that on the daily time frame chart, if this median line is broken, okay, then this area is acting as a support level. So on the weekly time frame chart, let's see where it is. So it's somewhere over here. Maybe this support would be the next area, and then the next area support would be these moving averages. All right, but the probability of Nifty falling down over here is a little bit less. Why? Is because the momentum is strong, and if you look at the monthly time frame chart, on a monthly candle, now this candle is complete, the May month candle is complete. So from the March, April, okay, from March it bounced back. April it gave a good closing uptrend,
above the high of the March candle, and this time again Nifty closed above the high of the April month. Okay, so that is again considered to be bullish. So we can expect that on a higher time frame, that is on this monthly time frame chart, um, it's slowly progressing towards this upper Bollinger Band, and yeah, we may see 26,440 levels, okay, in the coming couple of months. All right. So we'll have to wait and watch whether the RMI, that's the momentum indicator, is has not given a buy signal yet. Okay, but somewhere down the line, something like this, we are in a stage somewhere over here where the RMI has flattened out. We are trying to take support from the median line, and once there is a breakout, after the breakout, the RMI gives a buy, and then there is a rally. So probably we'll have to wait for to go full throttle. We'll have to wait for RMI to give a nice clear buy signal. All right. And preferably, generally it said that if it goes below the zero line and then gives a new buy signal, it is very strong. Okay, so we'll have to check whether RMI is completing its cycle, and is it going below the zero line and then bouncing back, or it's giving a buy signal right away. So this is something that you have to keep in mind, especially the long term investors. All right. On the very short term period over here, we can see that yeah, it's in a nice tight squeeze on this hourly chart here. All right. So on Monday, it's very simple. We have to wait for a breakout. Okay. So this a nice trend line can be drawn like this. So we are in a sideways territory. So we'll have to wait for a breakout on either side. Okay, and continue on the direction where there is a breakout. All right. Yeah, so Vivekji, for that, probably you will have to look at, Vivekji is asking how can we decide whether RMI is strong or not so strong. So for that, there are videos on, especially on RMI explaining. Okay, we have videos of Mr. Rohit Srivastava, the creator of RMI, Rohit Momentum Indicator. He himself has also, uh, given some videos, and the recorded videos are there on the YouTube channel. The videos are there on this section over here, learn section. There are webinars. Okay, so you can go through these sections over here. Yeah, he is Mr. Rohit Srivastava, best trading setups, short, medium term, long term with RMI. So Vivekji, I would recommend you to go through this video, okay, so that you understand RMI better. Okay. So let's get back to Nifty over here. And once again, let me pull up over here. So yes, the trend is short-term trend is sideways. The medium trend is up. The long-term trend is also up. Okay, the long-term trend is up. So we have to see that this short-term trend, which is sideways, is it turning up or is it turning down? This we have to wait and watch. All right, but likely it can turn up. There is high probability. Why? Is because the weekly RMI is in a bullish mode. All right, and what are the other factors why we are seeing that it may go up? So for that, we will go to the sentiment indicator section. All right, and on the sentiment indicator section, let's have a look at various FII futures position. So you can see that, hey, FII future position has come in the oversold zone. All right, it has come in the oversold zone, and whenever it is in the oversold zone like this, all right, and then it starts bouncing back. Okay, you can see a nice bottom that gets formed every time. Okay,
Okay, here you can see over here, this is where you can see a bottom that is being formed. Okay, when it comes and starts bouncing up from the oversold levels. So that's a good thing that so this was one thing where it did not make a good bottom, it just came down. But after that, yes, most of the time whenever the FII position, they are at the extreme short level. Okay, from there they start their covering, and once they start the covering, a nice bottom is being made, and the market starts bouncing up. So this is one indicator which is in a favor that okay, we are probably near a short term bottom. Okay. सुनील कुमार जी, हिंदी ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे हम लोग का आज का वेबिनार वैसे ही है। There is a major flaw. S&P Moody said US rating is downgraded and Indian stock market is nose diving. So लेट्स सी, अभी तो इंडिकेटर्स तो वैसे नहीं दिखा रहे। ओके, एफआईआई ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है। ओके, तो जब ये एक्सट्रीम से वापस बाउंस बैक होता है तो हमको वहां पे देखना है। ऑलराइट, सो एज ऑफ नाउ मैं न्यूज पे जो दिखाई देता है, वट एवर कम्स इन द न्यूज, ओके, आई डोंट फॉलो दैट मच, बट व्हाट आई फॉलो इज, और मैं किसको ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, न्यूज सुनता हूँ मैं, ठीक है, न्यूज है, यू हैव टू बी अपडेटेड अबाउट द मार्केट, यस, बट आपका जो डिसीजंस होता है, व्यू बनाना है, तो व्यू आप न्यूज बेस्ड व्यू नहीं बना सकते हो, आपको व्यू जो है वो डेटा बेस्ड न्यूज बनाना है। और ये जो हम लोग एनालाइज अभी कर रहे हैं वो है प्योर डेटा। ओके, तो डेटा एनालाइज अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके एनालिसिस अच्छा होने का चांसेस ज्यादा है। ओके, ओके, so let's go ahead and try to understand एक this also I had seen recently, domestic institutional investors। ओके, तो मतलब जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, फंड मैनेजर्स जो होते हैं इंडियन, सो व्हेनेवर दिस इंडेक्स कम्स एट अ एक्सट्रीम हाई एंड, ओके, ये एफआई का ऑपोजिट बिहेव होता है। सो व्हेन इट कम्स इन अ ओवरबॉट कंडीशन, वहां पे बॉटम बन करके ऊपर जाता है। ऑलराइट, सिमिलरली लुक एट दिस, ये जब एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है तो वहां पे कैसा अच्छा सा या एक बॉटम बन गया था। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर भी एक अच्छा सा ओवर में चला गया था और यहाँ पे ये बॉटम बन गया। ऑलराइट, and slowly and steadily this keeps coming down, so something like this we can expect over here, and slow and steadily market can start inching up। so DI index futures से हमको ये पता चलेगा, ठीक है। क्लाइंट प्लस एफआई नेट इंडेक्स फ्यूचर्स, ये अगेन सेम है, एकदम से ओवरसोल्ड लेवल्स पे से बाउंस बैक आ सकता है, सो ये जनरली नहीं देखते। सो पार्टिसिपेंट्स में से एफआईआई अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है, और दे डिक्टेट अवर मार्केट्स, समवेयर दे हैव मोर पावर। तो उन लोग की फ्यूचर पोजीशंस में क्या चल रहा है, तो उसके लिए एफआईआई नेट इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग परसेंटेज जो है ना, वो आप देख सकते हो, और यहाँ पे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स मार्क किए हुए हैं। सो बेसिकली हम लोग को वेट करना है कि जैसे जैसे ये एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे कहीं ना कहीं बॉटम बन सकती है, तो वो ध्यान में रख करके हमको चलना है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स लुक एट द मोमेंटम स्विंग इंडिकेटर। अच्छा, अभी विनय जी आप हमारे यहाँ पे फोकस करेंगे, बाकी लोग जो बोलेंगे बोलने देते हैं, हम लोग हमारे डेटा पे एनालाइज करेंगे और वहां पे फोकस करेंगे, या विनय जी?
All right. Let's move ahead now. मोमेंटम स्विंग इंडिकेटर जो है ना, वो क्या है कि कित आरएमआई, अभी आरएमआई एक मोमेंटम इंडिकेटर आपको पता चल गया। और लेट्स टेक निफ्टी पे मैं एक बार वापस आता हूँ। जिन लोगों को ये मोमेंटम स्विंग नहीं पता है, उसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। ठीक है। सो निफ्टी का आरएमआई अभी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग था, ये जो ग्रीन लाइन जो है ना। ऑलराइट। तो जब ये ग्रीन लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ओके, दैट मींस ये बुलिश साइड में जा रहा है। और आरएमआई मोमेंटम यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब नीचे जा रहा है। ओके, मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है। सो कितने परसेंटेज स्टॉक्स जो है, ऑलराइट, निफ्टी में कितने परसेंटेज स्टॉक्स जो है उनकी आरएमआई अपवर्ड स्लोपिंग है। सो एट द मोमेंट 29% का रीडिंग आ रहा है यहाँ पे। ओके। सो ये 29% का रीडिंग क्या बता रहा है कि एट द मोमेंट 29% ऑफ द स्टॉक्स का जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड? और सेम वे ये भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स की तरह आप ध्यान में रख सकते हो कि जब केवल 10% या 10 से भी कम परसेंटेज के स्टॉक्स का आरएमआई बुलिश साइड पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट मींस वो ओवरसोल्ड हो गया है। और जैसे ही मार्केट ओवरसोल्ड होता है, तो वहां से 1 या 2 दिन एटलीस्ट एक बड़ा बाउंस बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। सो जब भी ये ओवरसोल्ड हो जाता है, ओके, तो 1 और 2 दिन तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, यू गाइस कैन वेट for this particular daily swing indicator to come to an oversold levels. Look at the trend. If the trend is bullish, then for a couple of days you can create long positions. All right. And similarly on the opposite side, जब ये overbought चला जाता है, तो 1-2 दिन तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में रेड कैंडल्स आ सकती है। राइट। सो डेली स्विंग इंडिकेटर अभी फिलहाल 29% है, काइंड ऑफ ओवर सोल्ड के पास है। तो हो सकता है कि मे बी थोड़ा सा और मार्केट अगर साइडवेज रहा या नीचे आया और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़े उन लोग की आरएमआई थोड़ी नीचे आ गई, तो ये इंडिकेटर ओवर सोल्ड में चला जाएगा। एंड दैट वुड बी द टाइम टू अगेन गो लॉन्ग इन द मार्केट। ऑलराइट। सो यहाँ पे इसको दो चीज देखनी है। एक चीज हम लोग ने देखी कि मार्केट में यहाँ पे ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। तो ये सपोर्ट लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट में एक छोटा सा गिरावट आए, यहाँ पे रेड कैंडल आए, तो ये जो डेली स्विंग इंडिकेटर जो है वो ओवरसोल्ड चली जाएगी। और फिर वहां से अगर हल्का सा बाउंस बैक आना नजर आता है इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर पाएंगे फॉर कपल ऑफ डेज के लिए। ऑलराइट। सिमिलरली जैसे डेली स्विंग है वैसे एवरेज स्विंग, तो डेली स्विंग का एवरेज है, 9 पीरियड एवरेज है। तो आप दोनों ही इंडिकेटर यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। और यू कैन लुक एट एवरेज स्विंग और डेली स्विंग, दोनों को एक साथ देख सकते हो। ऑलराइट। और चाहिए तो यहाँ पे आप रोहित मोमेंटम भी ऐड कर सकते हो। सो द बेस्ट टाइम टू गो लॉन्ग कब होएगा कि जब एवरेज स्विंग ओवर सोल्ड चला जाए, डेली स्विंग ओवर सोल्ड चला जाए, और उसके बाद आरएमआई कहीं जो है ना वो बाई सिग्नल दे रहा है, तो वो बाई सिग्नल जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। और वहां पे आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक है। यस, हम लोग सेक्टर के पास भी आ रहे हैं। ओके। सो एज ऑफ नाउ हम लोग देख रहे कि निफ्टी को बेसिकली हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस जून मंथ, स्पेशली इन दिस कमिंग वीक, फर्स्ट वीक। तो वही एनालिसिस हम लोग करने की ट्राई कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। ऑफ कोर्स एक चीज तो आप सब मार्केट के लोग हो तो आप सबको इतना तो पता ही होगा कि मार्केट में कोई गारंटी है नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी की बात करनी चाहिए हमको। ओके। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है। ओके, वो जानने की हम लोग साथ में मिलकर के कोशिश कर रहे हैं अभी। ओके। सो ये रहा मोमेंटम स्विंग। सिमिलरली मार्केट ब्रेथ भी है, तो 20 डे एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है
वो बहुत ही शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है। तो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर में बेसिकली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और कोई स्टॉक्स ढूंढना है, तो ये 20 डे एडवांस डिक्लाइन रेशियो जब ओवर बॉट लेवल्स में है तो वहां पे थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और जब ओवर सोल्ड है, ओके, इस तरीके से ओवर सोल्ड है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ नाइस बाउंस बैक लाइक दिस। सिमिलरली 40 डे मूविंग एवरेज भी सेम उसी की तरह काम करेगा। ऑलराइट, एक अच्छा सा यहाँ से देखिए, एकदम से ओवरसोल्ड हो गया था और एक अच्छा खासा यहाँ पे ये एरिया जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम बन चुका है। राइट, और एक अच्छा सा रिकवरी दी है मार्केट ने। राइट, और अभी फिलहाल 40 डे एडवांस डिक्लाइन रेशियो ओवर बॉट में चला गया है। ओवर बॉट में चला गया है, तो थोड़ा सा अभी नया जो आप बाइंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, फिर सो ओवरऑल ये रहा मार्केट। अभी लेट्स निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। फिर वी कैन कम टू स्कैनर्स। स्कैनर्स में ये सारे सेक्टर का लिस्ट मैंने लगा करके रखा है, और आरएमआई स्कैनर में उसका आवरली, डेली, वीकली, मंथली का जो स्कैनर है, ओके, वो यहाँ पे हम लोग एक ही स्क्रीन में देख सकते हैं। ओके, यस कनन, ओके। जो डेली स्विंग और एवरेज स्विंग जो है, सबसे पहले तो डेली स्विंग। जो इफ द डेली स्विंग रीडिंग इज 50, मतलब निफ्टी के लिस्ट में से 50% ऑफ द स्टॉक्स की आरएमआई जो है, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स। ओके, so the daily swing and the average swing readings are based on the RMI signals. Okay, RMI. All right. Now, when we are looking at the the sectors, what we can see is the bank nifty first. Okay, bank nifty first of all, just understand on the monthly chart, few last week. Okay, in the last week, what we were getting is there was ऑल द सेल सिग्नल्स। यहाँ पे सेक्टर्स में जो था ना, मंथली टाइम फ्रेम में आरएमआई जो था ना, वो सभी का सेल सिग्नल था। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे 3 सेक्टर्स का न्यू बाई सिग्नल आया हुआ है। सो दिस इज अ गुड न्यूज, मतलब बुल्स के लिए। ऑलराइट, बुल्स के लिए एक अच्छा न्यूज है। तो निफ्टी बैंक में अगर हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं, तो मंथली चार्ट का आरएमआई जो है ना, वो यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन लाइन, रेड लाइन के ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, so this is a kind of a positive sentiment। वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का है, वो अभी भी बुलिश मोड में है। एंड यू कैन सी के बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस जो टॉप जो था, वो भी क्रॉस किया, नीचे आया, वहीं पे सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी इज इन अ बुलिश मोड ऑन डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम चार्ट। डेली चार्ट में यहाँ पे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो चुका है। ऑलराइट, एक तरीके से यू कैन से कि एक तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। तो वी कैन वेट फॉर अ ब्रेकआउट, और सिंस द आरएमआई इज इन अ न्यू बाई मोड, ओके, ऑलमोस्ट न्यू बाई हो गया है उसका, या बाई मोड में है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ अपवर्ड ब्रेकआउट। तो अगर बैंक निफ्टी में अपवर्ड ब्रेकआउट आई, तो वो निफ्टी को भी अपने साथ लेगी ना ऊपर। All right, so this is a bullish, points, bullish points. All right. Then the next is financial services. Okay, so बैंक निफ्टी के बाद जो financial services जो है, उसमें न्यू बाय आया हुआ है मंथली चार्ट में। ऑलराइट, और उसका भी एनालिसिस ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की तरह ही है, सिमिलर लेवल्स पे ही जा रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था जो अप्रैल के मंथ में ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लिया और फिर ऊपर ही जा रहा है। सो ये जो रेजिस्टेंस लाइन जो थी, वो अभी सपोर्ट लाइन की तरह हम लोग इसको पकड़ के चल सकते हैं। ऑलराइट, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पर भी एक काइंड ऑफ अ स्क्वीज जा रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, और यहाँ पे सेल मोड में है, लेकिन थोड़ा सा अपवर्ड साइड जाएगा तो यहाँ पे न्यू बाई सिग्नल जनरेट हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में। ऑलराइट, और फिर प्राइवेट बैंक, तो देखो सब पूरा मतलब बैंकिंग ही है। ओके, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, वही आउट परफॉर्मर चल रहा है।
और जो लोग हमारे साथ आरआरजी के वेबिनार में जुड़े थे, वहां पे भी हम लोग ने देखा है कि हर बार जो ये तीन सेक्टर जो है वो हमेशा वो लीडिंग सेक्टर में ही रहे हैं। ओके, तो आरआरजी के बारे पर भी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ और कंफर्म करेंगे हम लोग। So private bank is new buy over here. Weekly chart is already in a buy mode. All right. और ये इसका जो प्रीवियस जो टॉप जो है यहाँ पे जो ब्रेकआउट आ चुका है, ओके, उसके ऊपर चल रहा है अभी यहाँ पे। ऑलराइट, सो लेट्स सी ये सपोर्ट लेवल के नीचे जा रहा है कि वापस ऊपर जा रहा है। अगर चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा है। ऑलराइट, और यहाँ पे काइंड ऑफ अ सेल में है, लेकिन कभी भी एक न्यू बाई सिग्नल आ सकता है। ऑलराइट, सो प्राइवेट बैंक के बाद एक बार हम लोग पीएसयू बैंक पे भी नजर रख देते हैं। ओके, तो पीएसयू बैंक में अगर हम लोग डेली चार्ट देखें, सो पीएसयू बैंक का डेली चार्ट इज इन अ नाइस स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया हुआ है। और इफ वी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम ईयर टू ईयर, वी हैव अ ब्रेकआउट। लास्ट वीक एक ब्रेकआउट आया था, तो ब्रेकआउट के साथ अभी जा रहा है ऊपर। लेट्स सी। ओके, सो ओवरऑल ये एक कल की बहुत ही बुलिश कैंडल है पीएसयू बैंक की। ओके, वीकली चार्ट इज इन अ स्ट्रॉन्ग बाय मोड। ओके, नो साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। Alright, and PSU Bank has, on the weekly chart has also gone above the averages 40 EMA और 20 SMA, इन दोनों के ऊपर चल रहा है। और हाँ, ये जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन है, इसको भी एक अच्छे से ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ से। राइट, लास्ट वीक ये अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है। सो पीएसयू बैंक इज ऑल्सो लुकिंग बुलिश नाउ। लेकिन उसका मंथली चार्ट देख, हाँ ओके, सो ऑलमोस्ट आरएमआई जो है उसकी साइकिल कंप्लीट होने के पास है। हल्का सा टच होकर के यहाँ से अगर अगर मंथली चार्ट पीएसयू में बाई सिग्नल अगर आ जाता है, तो दिस पीएसयू बैंक कैन परफॉर्म। सो next week what remains in focus is banking, private bank and PSU bank, financial services भी। तो ये सारे फोकस में रहने चाहिए। बाकी ऑटो एनर्जी में कौन सा है, न्यू सेल, तो ये एक बार न्यू सेल देख लेते हैं। ओके, सो काइंड ऑफ फ्लैट है, तो ये न्यू सेल का न्यू बाय में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। राइट, ओवरऑल यहाँ से एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। राइट, काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल वंस अगेन। ओके, मंथली में मोमेंटम बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है। ऑलराइट, और एवरेजेस के ऊपर जा चुका है। सो 40 EMA वीकली चार्ट जो है एनर्जी का, तो दैट इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट लेवल। राइट, ओके, इसका मंथली चार्ट भी देख लेते हैं एनर्जी का। सो अच्छा सा सपोर्ट लेकर के ऊपर आ रहा है। एनर्जी ने अपने आरएमआई जो है उसने इस तरीके से ये, लुक एट दिस, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये पहले भी डिस्कस हम लोग ने किया हुआ है कि जब 40 EMA और लोअर बैंड के पास आया, सपोर्ट लिया, वही टाइम पे आरएमआई ने यहाँ पे इस तरीके से अपना जो साइकिल जो है वो कंप्लीट किया, और फिर यहाँ पे न्यू बाई सिग्नल दिया, और वहां से फिर एनर्जी का इंडेक्स जो है वो भाग गया। सो काइंड ऑफ थिंग अभी यहाँ पे ये लेवल के आसपास जो था, ये लेवल के आसपास जो था, आई थिंक सेम लेवल्स के आसपास 40 EMA के पास हम लोग यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। थोड़ा सा मे बी 20 SMA के ऊपर अगर चला जाए, तो हो सकता है ये आरएमआई भी बाई सिग्नल दे दे, और फिर इसमें इस तरीके से यहाँ से तेजी आ सकती है। सो एनर्जी इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन। और ये हम लोग मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, तो एज अ इन्वेस्टर एनर्जी के जो स्टॉक्स है उसके ऊपर आप ज्यादा एनालिसिस आप कर सकते हो, और फाइंड आउट कर सकते हो, एंड यू कैन बी रेडी टू इन्वेस्ट इन दीज काउंटर्स। ओके, जो सेक्टर्स खराब लग रहे हैं, ओके, वो एक एफएमसीजी लग रहा है मुझे, क्योंकि वो डेली चार्ट में सेल मोड में है आरएमआई। ओके, कंप्लीटली डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये 40 EMA के नीचे जा चुका है ऑलरेडी। ऑलराइट, सो नॉट, थोड़ा सा बेरिश आउटलुक आ रहा है एफएमसीजी के डेली चार्ट पे।
वीकली चार्ट पर क्या हो रहा है कि वो है बुलिश, लेकिन देखो आरएमआई ने टर्न डाउन कर दिया है और वीकली बेसिस पे अगेन ये 40 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे एक ही हफ्ते यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, लेकिन वापस नीचे आ गया। ऑलराइट, और मंथली चार्ट पे हाँ यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, लेकिन अगेन 20 एसएमए जो है वो रेजिस्टेंस भी है। रोहित मोमेंटम ने उसकी साइकिल कंप्लीट कर ली है, तो अगेन वील हैव टू वेट एंड वॉच। बट अगर आप मुझे एनर्जी और एफएमसीजी में से अगर चूज करने को बोले तो मेरा एनर्जी के पास और प्रोबेबली वाई इवन एनर्जी, जब हमारे पास पीएसयू बैंक और बैंकिंग है, तो एफएमसीजी में ज्यादा फोकस करके कोई खास ये नहीं है। ऑलराइट, सो यही सेम चीज जो है आप ये हर एक इसके लिए कर सकते हो। यहाँ पे मंथली में आसानी से यहाँ पे 1 2 3 ये 3 चीज इन लोग ने बता दिया है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक पे फोकस करना है। सो ये सेम चीज हम लोग आरआरजी के ऊपर जाकर भी हम लोग देख सकते हैं। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट आरआरजी डेली चार्ट में यू कैन सी के पीएसयू बैंक का जो आरआरजी है, इट इज इन अ राइजिंग मोड। फॉर दोज हु डोंट नो आरआरजी, डोंट वरी, फॉर नाउ आप इतना समझ लो कि जो लीडिंग क्वाड्रेंट में और द एरोज व्हिच आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट side, like in this PSU bank over here, okay, they are considered to be bullish, where they are relatively stronger than Nifty. Okay, they are outperforming the benchmark, and their relative outperformance momentum is also going up. Okay, so the momentum and the relative strength, both of them are rising, so they are considered to be bullish. Whereas you can see that metal, media and realty, okay, they are outperforming Nifty, but they are slowing down. Okay, their momentum is sloping downwards. Okay, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ये लेवल्स पे। Okay, and sloping down से it can come into auto and IT like this. So here PSU Bank is in the leading quadrant on the daily time frame chart. Private bank, bank Nifty and financial services Nifty, they all are headed towards the leading quadrant. Okay, so again ये daily RRG पे यही कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये जो 4 बैंकिंग और पीएसयू और प्राइवेट बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये ये चारों सेक्टर जो है वो लीडर्स रह सकते हैं। लेट्स सी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में दिस वीक पीएसयू बैंक हैज एंटर्ड द लीडिंग क्वाड्रेंट। मतलब अगले 1 2 हफ्ते के लिए तो पीएसयू बैंक पे फोकस हम लोग कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल इसमें मोमेंटम कम नहीं होना चाहिए। अगर मोमेंटम अगर कम हो गया तो ये ऑयल एंड गैस की तरह हो जाएगा कि वो नीचे की तरफ जाएगा, तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्लो हो गया है, भले लीडिंग क्वाड्रेंट में, लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है। बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उन लोग का मोमेंटम कम हो रहा है, सो दे आर प्रोबेबली दे मे एंटर इनटू द वीकनिंग क्वाड्रेंट। So again, by looking at weekly, daily RRG and looking at the scanners, what we can conclude is, the leader sector for coming week is, Nifty PSU clearly. Okay. प्रकाश जी प्लीज चेक रिलायंस। सर प्रकाश जी, आपके पास ये पोर्टल है, आई एम श्योर आपके पास ये पोर्टल रहेगा। और सेक्टर एनालिसिस में जिस तरीके से कर रहा हूँ वैसे ही स्टॉक स्पेसिफिक कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे सेक्टर में जा करके यू कैन गो टू विच वन, ऑयल एंड गैस, राइट। तो रिलायंस का देखना है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में चले जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑयल एंड गैस में जितने भी सेक्टर्स होंगे उसका यहाँ पे आरआरजी का चार्ट ओपन अप हो जाएगा। सिमिलरली स्कैनर्स में जा करके आप यहाँ पे बास्केट में आप ऑयल एंड गैस सेक्टर चूज करो, तो आपको सारे रिलायंस का और बाकी सब और भी सारे स्टॉक्स का आपको आवरली, डेली, वीकली और मंथली आरएमआई मोमेंटम उन लोग का क्या बाई मोड में है या सेल मोड में है, वो आपको पता चल जाएगा और अकॉर्डिंगली आप उसको एनालाइज कर पाओगे। ओके।
एक क्वेश्चन है कि आपका स्ट्राइक प्लेटफॉर्म क्या डेली ट्रेड लेने के लिए यूजफुल हो सकता है या सिर्फ इन्वेस्टर्स का प्लेटफॉर्म है? डेली ट्रेड फिरोज जी, आप डेली ट्रेड भी ले सकते हो, ओके, और इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा फिरोज जी, कि जो डेटा आ रहा है वो 1 मिनट डिलेड डेटा आ रहा है। तो अगर आप स्कैल्पर हो कि जो आप 1 मिनट के अंदर ही आपको अगर ट्रेड खत्म कर देनी है, बाई सेल करके खत्म लेनी है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि डेटा 1 मिनट डिलेड डेटा रहेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको आज लेना है और कुछ 2-3 घंटे के बाद आपको स्क्वायर ऑफ करना है, तो ये डेटा आपको डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। ओके फिरोज जी। श्योरली गौरव, स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में भी उसका भी यहाँ पे हम लोग जब डिफ्यूजन इंडिकेटर्स पे आता हूँ तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। Mali Shetty, why so many sells and buys? Any date or time? So yeah, Mali Shetty, I don't think so. You are using this. You can definitely go and subscribe to our platform. All right, web.strike.money, where you can put up your symbols over here. Okay, you can make your own watch list. I have made my own watch list on sector Z, where all these watch lists, all these sectors I have included. All right. And what does this buy and sell say is that Nifty hourly chart, if I click on this says that on the hourly chart, this RMI line, green line, is above the red line, and hence it is in a buy mode. Okay. On the daily time frame chart, if I say, on the daily also it is in a buy mode. On the monthly, if I click, it is in a new buy mode, meaning just today, this month itself. Okay, the green line has crossed above the red line, and that's why it's in a new buy. Okay, what does this new sell mean? New sell meaning the green line has gone below the red line on the daily time frame chart. So RMI is nothing but the momentum indicator. Okay, it is just like MACD, but much 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 better than MACD, which gives you more better signals, okay, and quicker signals. So this particular indicator has been prepared by Rohit Srivastava, and hence the name Rohit Momentum Indicator. So within, you can also select any of the, let's say, small cap stocks. Okay, if you want to select the small cap index, where is the small cap index? So mid cap 100. So if you just click on this mid cap 100, all the stocks that are included in the mid cap, okay, they are buys and new buys and sells, you will be able to find out in one single page. And further, if you want to say that, okay, on the monthly chart I want all the new buys, so within one click you will get a list of stocks जहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में ये सारे स्टॉक्स का जो RMI जो है वो बाई मोड में आया हुआ है. And then you just click on that any particular stock on the monthly time frame chart, do your further analysis, and then you decide where to enter, where to exit, where to put target, where to put stop loss, all these things. Okay. Now, how is the mid cap index looking? If you want to ask me that, Gaurav ji, what you can do is, यहाँ पे आप डिफ्यूजन इंडिकेटर्स में जा सकते हो. ऑलराइट. और डिफ्यूजन इंडिकेटर्स में you can select Nifty mid cap. So you will get the Nifty mid cap ka stock chart, and the indicator over here is percentage of stocks about 20 SMA. So now you can see the history over here. Okay, whenever it has reached the overbought level, there is some correction in the mid cap index. Whenever it has reached, it has given some correction. So again, it has reached and coming down. So probably we can expect some correction in the mid cap counters. Okay, and when to start buying mid cap counters? When this particular indicator is at its bottom. Okay, so this is where you buy. So this indicator, percentage of stocks about 20 SMA, is a short term indicator. तो आपको शॉर्ट टर्म में कब एग्जैक्टली बाय करना है, तो वो टाइमिंग करने के लिए ये इंडिकेटर आपको बहुत हेल्पफुल होगा. राइट. सिमिलरली अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डे SMA कर लो.
सो दिस वाज जहाँ पे मार्च का टाइम जो था, सो दैट वाज अ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मिड कैप स्टॉक्स ओवर हियर. बहुत अच्छा बॉटम बना था आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर ऑलमोस्ट यू कैन से जून 2022 के बाद 25, ऑलमोस्ट 3 इयर्स, 3 साल के बाद दिस इंडिकेटर केम टू एन oversold level, and from there a wonderful rally over here. So now, so you can see that okay, it's nice. अभी इसका support level कहाँ पे हम लोग draw कर सकते हैं? Yeah, you can draw a trend line like this over here. All right, you can draw a trend line like this over here. All right, and you can say that okay, mid cap is currently trading in this triangle range. All right, and it has also crossed above this, but it has given a breakout. Yeah, yes, it has given a breakout. It has given a breakout over here. So now whether it is breaking above this high or not, giving a closing above it or not, this is what we have to watch. All right, but अगर शॉर्ट टर्म इंडिकेटर देखते हैं तो थोड़ा सा अभी भी ये इंडिकेटर थोड़ा सा नीचे जा की तरफ जा रहा है. ये वापस ऊपर एक बार मुड़ता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. All right. Similarly, you can say small cap index. So in a small cap index, again, look at this. This is slowing down. Okay. So again, mid cap, small caps में थोड़ा profit booking आ सकता है short term के लिए. All right. But that short term profit booking अगर आता है, तो what should we do? We should start entering into it because the trend is positive. Okay, Gaurav, I hope you've understood, how do we analyze small cap and mid cap stocks as well. Great. So yeah, that was about scanners, RRG, sentiments, and diffusion indicators. And I think we have come to a nice by analyzing we have come to a nice conclusion that okay, the banking is the sector where we have to focus on, and more focus should be on public sector banks. All right. Any questions that you would like to ask me, you can feel free to ask me now. मनोज जी, द डिफ्यूजन इंडिकेटर इज राइट हियर, लेफ्ट हैंड साइड पे एनालाइज सेक्शन है, यहाँ पे डिफ्यूजन इंडिकेटर्स है. So once you click on it, this diffusion indicators tab will get open up. There are simple moving averages. Then you also have RMI, percentage of stocks with RMI buy signal. So in mid cap 100 stocks, out of mid cap 100 stocks, 45% of the stocks का RMI जो है ना वो buy mode में है. Okay. तो अगेन दिस इंडिकेटर इज वर्किंग लाइक एन ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स. जब ये इंडिकेटर एकदम से लो पे आ जाता है, यहाँ पे 10 और 20 के बीच में आ जाता है, दिस इज वेयर द परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स विद आरएमआई बाई इज ओनली 10%. मतलब 100 में से केवल 10 स्टॉक जो है उसका आरएमआई बाई मोड में है, बाकी सबका सेल मोड में है. दैट मीन्स द स्टॉक मार्केट इज ओवरसोल्ड स्मॉल कैप 100 में से. So we can expect a bounce back. Similarly, ये एकदम से overbought आ जाता है. Okay, so it can slow down over here. Similarly, we have MACD, RSI, ADX. Okay, so ये बहुत सारे indicators है. You can just go click and जरूरी नहीं है कि आप ये सब कुछ यूज करो, लेकिन जो लोग RSI यूज कर रहे हैं, बहुत सारे traders केवल RSI यूज कर रहे हैं. So if you want to find out percentage of stocks with RSI greater than or equal to 50, you will get this figure over here, and then you can do your own analysis. Try to see what has happened, how has this indicator behaved in the past. All right, so when we look at this indicator, we can see that okay, when this is at the oversold levels, again it's bouncing back nicely. All right, so wait for it. Right now it is in the overbought level. So ओवरबॉट है, बहुत सारे इंडिकेटर शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी पहले 1-2 दिन थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है या मे बी साइडवेज रह सकता है. ओके, बट द मीडियम टर्म आउटलुक जो है वो बुलिश है. सो दिस डिप शुड बी बॉट इनटू इट. कंपैरिजन बिटवीन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एसबीआई वर्सेस एक्सिस बैंक, महादेव जी. सो ये कंपेयर करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप आरआरजी में जाइए.
आरआरजी में जाकर के आप यहाँ पे निफ्टी बैंक जो है ना उसको डाल दो, और यहाँ पे एक्सिस बैंक और एसबीआई। नाउ यू कैन स्टडी। ओके, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, यू कैन गो टू डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम। ओके, लुक एट देयर इंडिविजुअल चार्ट, उन लोग का आरएमआई क्या है, किसका आरएमआई ज्यादा स्ट्रांगली बाई है या सेल मोड में है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन डू योर ओन एनालिसिस। राइट महादेव जी? हाउ टू मैनेज इफ स्टॉक ब्रेक्स आउट एंड गोज बैक डाउन अगेन? सो नील बख्शी जी, इट्स अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कि जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट आता है, 80 to 90% of the time after the breakout, what happens is that it comes to retest. Let's say for example, this was a trend line. Okay, and stock is coming up over here, and then it gives a breakout. After the stock gives a breakout, most of the time it will give a retest. And over here, when the stock retest, you look at RMI. If RMI is in a buy mode, then you can go ahead and buy the stock accordingly. RMI monthly shows sell, but daily, weekly shows buy or new buy. How to interpret such? So KKBB, I don't know आपका नाम क्या है. यहाँ पे मैं वापस निफ्टी का इंडिकेटर रोहित मोमेंटम डाल देता हूँ. सो डेली टाइम फ्रेम में आरएमआई जो है वो बेरिश मोड में है, लेकिन वीकली में बुलिश है. नाउ हैव अ लुक एट दिस. मैं थोड़ा पास्ट एग्जांपल देता हूँ. लुक एट दिस. देखो यहाँ पे. ओके, सो ये लेवल पे, ये कौन सा टाइम फ्रेम है? वीकली टाइम फ्रेम चार्ट. ओके, केकेबीबी, ये वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है. तो यहाँ पे इस हफ्ते, ओके, 10th अप्रैल 2023 को वीकली टाइम फ्रेम में आरएमआई ने बाई सिग्नल दिया था. ऑलराइट, सो अभी क्या करना है कि जब आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट में जाकर के देख रहे हो, ऑलराइट, लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाकर के ये रहा. ओके, so let's assume this is today. Okay, let's assume this is today. तो अभी करना क्या है कि मार्केट तो ऊपर चला गया है. ओके, मार्केट ऊपर चला गया है, तो उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जब न्यू सेल सिग्नल देता है, अभी वीकली चार्ट पे तो आरएमआई बाई मोड में है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ये न्यू सेल आ गया है. तो क्या यहाँ पे सेल करें? तो आंसर इज नो. यहाँ पे आप ये जो न्यू सेल है ना वो इग्नोर करें. हायर टाइम फ्रेम में अगर बाई मोड में है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी जब बाई आएगा तभी हम लोग बाई करेंगे. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाई आया, तो यहाँ पे बाई आने के बाद आप, दिस इज द प्लेस वेयर यू गो लॉन्ग इन निफ्टी. एंड लुक एट दिस, यू गेट सम नाइस मूव अप ओवर हियर. जब सेल मोड में आता है तो उसको इग्नोर करना है. कब तक ये सेल इग्नोर करना है? जब तक हायर टाइम फ्रेम पे न्यू सेल नहीं आ जाता है तब तक. तो हायर टाइम फ्रेम पे न्यू सेल कभी आया? इधर आया. तो यहाँ पे, सो ऑल दिस वाइल, ओके, अभी अभी यहाँ से देखो ये न्यू बाई सिग्नल आया, यहाँ पे ये वाला न्यू बाई सिग्नल आया, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम तो न्यू सेल हो गया है, तो यहाँ पे बाई करने का नहीं, अभी न्यू सेल सिग्नल पकड़ने का. क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में न्यू सेल है, सेल मोड में है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे सेल सिग्नल पकड़ना है. Okay, so here you get a nice and ignore the buys. All right. So you can go through the RMI again, once again, KKBB. Okay, वहां पे RMI exactly क्या है, कैसे बनता है, उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, उसके डिटेल में हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है. आज मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट दे दिया. बहुत बहुत मनीष जी, आरआरजी भी एक अपने हिसाब से, आरआरजी इज जनरली सेक्टर एनालिसिस करने के लिए है, लेकिन जहाँ मतलब फोकस कहाँ है, इतना 5,000 स्टॉक्स है ना मनीष जी, या तो उसमें से कौन से सेक्टर में फोकस करना है तो वो पहले देखना है. तो उसके लिए आरआरजी इज वेरी गुड. ओके, और फिर आपको पता चलेगा कि आरआरजी से कौन सा लीडिंग में जा रहा है, तो वो हिसाब से आप फर्दर उसका चार्ट पढ़ोगे, तो उसके लिए मोमेंटम इंडिकेटर लगेगा, तो उसके लिए फिर आप आरएमआई यूज कीजिए. ओके,
ओके, अनुज गुप्ता जी, तो आज तो अभी हमारे पास स्ट्राइक हुआ इनसाइट्स के लिए समय नहीं है, लेकिन वी विल कम आउट विथ सच टॉपिक्स। ओके, एक फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाएगा, तो उसमें ये आप फीडबैक डाल दीजिए कि वी वांट अ सेशन ऑन स्ट्राइक ओवर इनसाइट्स। ओके, सो और पास्ट में भी हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस किए हैं स्ट्राइक ओवर इनसाइट्स पे, यही यूट्यूब चैनल पे। उसके जस्ट गो थ्रू, आप लाइव सेक्शन में जाइएगा यूट्यूब के, और वहां पे सारे जो सेशंस, लाइव सेशंस किए थे, उसका रिकॉर्डिंग वहां पे दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, तो यू कैन प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म। यू कैन फिल दिस फीडबैक फॉर्म, और ये सेशन कैसा लगा उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। कौन सा सेशन आपको, कौन से टॉपिक पे कौन सा सेशन चाहिए, तो वो सब आप लिख सकते हो। कौन सा टाइम प्रेफरेबल होगा, शाम के 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, तो वो सारा चीज आप फीडबैक फॉर्म में आप हमको लिख सकते हो। ओके, और हाँ, जो लोग ने अभी तक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब नहीं किया, स्ट्राइक को अभी इस वेबिनार में आप सब्सक्राइब करोगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो अगर आप लेते हो, तो आपको डिस्काउंट्स मिलेगा कुछ, और वो डिस्काउंट मिला करके फीस जो है, सब्सक्रिप्शन फीस, वो 5000 रुपीज का होगा। ओके, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो 3000 रुपीज में होगा। सो जल्दी से, जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन सब्सक्राइब टू स्ट्राइक, web.strike.money। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग एक बार वापस, अनुज, वी विल हैव वन सेशन ऑन स्ट्राइक इनसाइट्स, और तभी वी विल यू कैन जॉइन दैट सेशन, और वहां पे आपका कंफ्यूजन हम लोग सॉल्व करके देंगे। ओके, अनिमेश जी, आई एम अफ्रेड हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक का हम लोग अभी आज नहीं देखेंगे। ओके, चार्ट। एनी अदर डाउट्स और क्वेश्चंस, कोई इंडेक्स पे अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो। कुछ और कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता सकते हो। आज जितना भी हम लोग ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, आरआरजी, डिफ्यूजन इंडिकेटर्स, स्कैनर्स। ओके, सेंटिमेंट इंडिकेटर्स में पार्टिसिपेंट्स पोजिशनिंग, डिफ्यूजन इंडिकेटर्स में देयर आर सिंपल मूविंग एवरेजेस, ये बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, okay? और कोई क्वेश्चंस रह गया मेरे से? अनिमेश, सो डिफेंस सेक्टर अभी यहाँ पे आया नहीं है। ओके, हम लोग डिफेंस सेक्टर का यहाँ पे इंडेक्स जो है ना, नहीं है। ओनली इंडाइसेस आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओनली इंडाइसेस आप कर सकते हो, ये वाला। ओके, लेकिन जैसे यहाँ पे मेटल मीडिया और है ना, पीएसयू बैंक फार्मा, वैसे डिफेंस का अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन बहुत जल्द बन जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चलो ठीक है, डिफेंस सेक्टर के बारे में तो आपके लिए HAL का एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, बट प्लीज डोंट कंसिडर दिस के एज अ व्यू, अनिमेश। ये मैं कोई मेरा व्यू नहीं देने वाला हूँ। मैं केवल जो इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं ना, तो वो मैं आपको बता दूंगा। सो डेली टाइम फ्रेम पे RMI जो है वो सेल मोड में है, और प्राइसेस जो है वो साइडवेज जा रहा है। ठीक है, इसका जो न्यू बाई सिग्नल आया था वो यहाँ पे आया था। ओके, मार्च के महीने में। ओके, जहाँ लोअर बैंड से अच्छे से बाउंस बैक आया था, और ऑलमोस्ट 3300 से लेकर के ऑलमोस्ट 5000 पहुंच गया। ओके, सो वेरी पावरफुल बाई सिग्नल ओवर हियर। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में ये अभी भी बाई मोड में, देखो वीकली और डेली दोनों ही सेम, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बाई मोड में आए थे। ओके,
और मंथली टाइम फ्रेम पे भी अभी फिलहाल सेल मोड में है। ओके, सो मे बी ये अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तो वो देखना है। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ओके, थोड़ा सा मुझे अभी तक मंथली चार्ट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। इतना नजर आ रहा है कि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस है, वहां पे ये जो स्टॉक है वो सपोर्ट ले रहा है। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे डिफेंस के स्टॉक्स के चार्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। ओके, सो दैट वाज माय टाइम माय फ्रेंड्स। आई होप आज का आपको सेशन पसंद आया हो। फीडबैक फॉर्म में जरूर लिख करके मुझे बताइएगा। और सी यू सून। से हैव अ ग्रेट लवली वीकेंड। केमिकल सेक्टर, यस यस, सो वो सारे सेक्टर्स जो है जो नहीं है वो अभी एड अप हो जाएंगे वेरी सून। ओके, सो यू गाइस हैव अ ग्रेट weekend ahead, and happy learning, happy trading. See you. Bye bye.